Good morning students. So as we know we are doing the chapter work, energy and power. So our next topic is the potential energy. In the last video session we have discussed about the kinetic energy, and the next topic which we will do today is potential energy and its further application. In standard 9th also we have discussed that potential energy is defined as the energy possessed by a body और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज़ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कि अगर कोई बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज़ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी. Suppose I am throwing any object up to a certain height, and if it will come on the rest over there after reaching a tower or a certain height, which energy it will have? It will have the potential energy. Or if I am throwing any object or any ball towards the earth, when it will come on the earth it will gain rest position, and which energy it will have? It will have the potential energy. We know work done and energy both are equal terms only. So we know work done is equal to force into displacement. Force, suppose I am having a ball and the ball will have certain mass also. The ball will have mass also, and due to gravity it will go downside. So mass we will take as small m, and g due to gravity it will reach on the earth. So f I can write as mg, and displacement, if I am throwing any object from a height it will reach towards the earth due to gravity, so displacement will be h. It means expression for the potential energy we will have mgh. Clear this thing? For the kinetic energy we did the expression half mv square, and for the potential energy we are having mgh. Furthermore, we are having two types of potential energy: gravitational potential energy and the elastic potential energy. Gravitational potential energy, due to which two objects are attracted towards each other, is called the gravitational potential energy. Elastic potential energy, I can take the example of spring. When we stretch it or compress it, the stretching or compressing is due to the elastic potential energy in the spring. Clear? These were the examples. And the next topic we are having the mechanical energy. In the basic terms we are having too many energy: chemical energy, sound energy, nuclear energy, geothermal energy and many more. But basic terms we are having the kinetic energy and the potential energy, and the sum of these energy remain constant always. Kinetic energy plus potential energy is always constant. And to prove this we are having a topic, that is conservation of energy for freely falling body. Conservation of energy means it states that energy can neither be created nor can be destroyed, only can be converted from one form to another form. So here we are having the derivation and expression also for this. To derive this expression we will take few assumptions. Just see, suppose I have a ball and I have to study the position of ball at three positions. Firstly A, then B, then at the position C. When the ball is at the position A, its initial velocity is 0. U is initial velocity which is equal to 0. Now it has fallen towards the earth and reached over here, so its velocity can become equal to v is equal to v1. पहले बॉल मूव नहीं कर रही थी, इट वॉज एट रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. एंड व्हेन इट विल मूव फर्दर इट विल गेन सम वेलोसिटी. वेलोसिटी की वजह से ही तो बॉल नीचे आएगी. सो v किसके इक्वल आ गई? v को मैंने लिख लिया v1. अगेन इट विल मूव अप टू सम एक्सटेंट, थोड़ा सा और मूव करेगी तो v किसके इक्वल आ जाएगी? v2. अब यहाँ से A पॉइंट से लेके C पॉइंट तक बॉल की हाइट है h. B तक आई तो B से लेके C तक इसकी हाइट है h माइनस एक्स. C पे आई तो हाइट क्या होगी? 0. बॉल क्या आ गई? फ्लोर पे आ गई ऑन रेस्ट, सो इट्स हाइट विल बी 0. नाउ वी विल डिस्कस फर्दर. At A, at position A, the kinetic energy of the ball is 0. Why? Ball or body. Why it is 0? Because its initial velocity is 0 as it is at the rest position. So kinetic energy of the body at position A is 0 because initial velocity is 0.
Next we are having potential energy. As we are having the ball at a certain height, due to certain height I can write its potential energy as mgh, h because it is at a height from C. You can see बेटा यहाँ पे है बॉल A to C, यहाँ से A और C में से कितना हाइट का डिफरेंस है, स्मॉल h. क्लियर. नाउ वी नो काइनेटिक एनर्जी तो हमारी ज़ीरो होगी क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो. सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी हमारी है बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो. सो सम विल बी इक्वल टू mgh. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट एट पोजीशन बी. अब बी पोजीशन पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी, चाहे वो बी तक मूव करके आई, वी उसके पास वेलोसिटी आ गई v1, बट उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी. और बी पोजीशन पे जब वो आई उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी हाइट हो जाएगी h माइनस एक्स, क्योंकि वो थोड़ी सी नीचे वाली हाइट पे आ गई बट उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है. अब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है. अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और आई कैन राइट इट एज 2gh. क्लियर. सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. h की जगह पे हमने क्या लेनी है, x हाइट लेनी है. b पे आया तो कितनी हाइट कवर कर ली उसने, x कवर की है. h सपोज हमारी 5 मीटर है, 5 में से थोड़ी सी उसने कवर कर ली x, तो h की जगह मैं क्या लिख लूँगी, x. एज आई टोल्ड यू इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो, सो आई हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx. नाउ वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m एज इट इज. इन प्लेस ऑफ v आई विल पुट 2gx. This 2 will get cancelled by 2 and kinetic energy is mgx. Now for the mechanical energy we need both the energies, kinetic as well as potential. For kinetic energy we found expression mgx. Now for the potential energy, as height above ground means cb is equal to h minus x, we have to take this height. So cb is equal to h minus x and we know potential energy is equal to mgh minus x, and mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. For kinetic energy we found mgx, for potential energy we have mgh minus x. After adding these two equation mgx and mgh minus x, I'll have mechanical energy is equal to mgh. You can see beta in the first equation also I found net mechanical energy as mgh. Here also on the position of b mechanical energy is mgh. One position is left only. Now c, at c, अब जब बॉल सी पोजीशन पे आ जाएगी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ज़ीरो. और अगर हाइट ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. बट काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, अब इसकी वेलोसिटी और चेंज होगी. देन वी कैन राइट दिस इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. इनिशियल तो हमारी ज़ीरो ही थी, सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv2 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे बॉल आ गई तो v2 की वैल्यू फिल कर देंगे. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 स्क्वायर आई विल हैव काइनेटिक एनर्जी एज mgh. अब बॉल की हाइट कुछ रही ही नहीं, वो रेस्ट पे ग्राउंड पे आ चुकी है. व्हेन इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्राउंड सो इट्स हाइट विल बी ज़ीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो बी ज़ीरो. Now we need to find expression for mechanical energy which is equal to sum of kinetic energy and the potential energy. So mgh plus 0, potential energy is 0 and mechanical energy we are having mgh. You can see beta at position A also we found mechanical energy is equal to mgh. At position B also mgh. At C also mgh. What it proves? It proves that energy is conserved for freely falling body, which proves a law of conservation of energy. Clear?